Good afternoon, students. Today we discuss the powers and functions of the President of India. As we discussed earlier, that the President is the head of executive and the constitutional head of our nation. We also discussed about President that he is the first citizen of our country. Let us start with the powers and functions of our President. First, that is executive powers or executive functions. The Constitution of India says that all the executive orders are vested in the Indian President. As we know, who is the head of executive? The President. And all the executive order can be passed on the name of President or by the President. All executive decisions are taken in the name of the President. जितने भी कानून लागू किए जाते हैं वो सभी किसके नाम पर किए जाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं. The President appoints the Prime Minister and on his advice the Council of Ministers. Who appoints the Prime Minister of India? The President. And after on his advice he also appoints the Council of Ministers. It is the duty of Prime Minister to inform the President about all the important decisions which are taken by his council. The President appoints the Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India, judges of Supreme Court and High Courts, governors, etc. All these great personalities are appointed by the President of India. So all these are the executive functions of the President of India. Next is military power. The President is the Supreme Commander of Defence Forces of India. We have mainly three wing of armed forces: Air Force, Navy and Army, and he is the supreme commander of all three armed forces in our country, India. The President has power to declare war and peace. युद्ध और शांति की जो घोषणा है वो कौन करता है? वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी करते हैं. So all these are the military functions or military powers of the President. नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर्स. राजनयिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एम्बेसडर अब्रोड. विदेशों में रहने वाले राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं. एंड दिस पीपल रिप्रेजेंट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन अब्रोड नेशन. ओल्ड ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जितनी भी संधियाँ और अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, आर साइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं. He even receives paper from diplomatic envoys of other states. Next one is legislative power. विधायी शक्तियाँ. The president has the power to summon and program the parliament and dissolve the Lok Sabha. Yes, the president has the power to dissolve Lok Sabha on the advice of prime minister. The president nominates 12 members to Rajya Sabha from among specialists in the fields of art, media, culture and so on. राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं कला, साहित्य, संगीत के अंदर. एंड द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 मेंबर इन लोकसभा एज एंग्लो इंडियन बाय आर्टिकल 331. और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट राष्ट्रपति जी लोकसभा के अंदर कर सकते हैं. The President has power to address and send message to both the houses of Parliament. कभी भी किसी सरकार का जो नया सत्र शुरू होता है वो देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही क्या होता है? शुरू होता है. एंड नो मनी बिल आर्टिकल 110 से कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज कॉन्सेंट. किसी भी धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होती है. नेक्स्ट वन इज the president give assent to a bill after which it becomes a law. Any bill become a law after the final assent of the president. As we know that parliament has 2 houses, but president is the most important part of parliament because after his assent any bill become a law. कोई भी बिल कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं. However, he can send the bill back once for reconsideration after it has been passed by the parliament. एक बार संसद अगर किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति की भी ये पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर है कि वो उस बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा से पार्लियामेंट के पास भेज सकता है. If the bill is again passed after reconsideration, he has to give his approval. अगर सेम बिल रिकन्सिडरेशन के बाद वापस आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देना जरूरी हो जाता है. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123.
अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 123। इसमें क्या कहा गया है? अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी अचानक कानून की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और देश के लिए नया कानून ला सकते हैं। An ordinance is an order of the executive which has the same effect as an act of parliament. The ordinance is promulgated when both houses of parliament are not in session. Such an ordinance will cease to operate at the expiry of 6 weeks from the reassembly of parliament. पार्लियामेंट सत्र शुरू हो जाने के 6 सप्ताह तक इसकी वैलिडिटी होती है, बाद में अपने आप समाप्त हो जाता है। The President has power to call joint session of the two houses of Parliament. Article 108. Article 108 क्या कहता है कि if there is any dispute between the two houses of Parliament, then the President has power to call or summon the two houses of Parliament and solve the dispute. अगर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी साधारण बिल को लेकर मतभेद होते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट पावर, दैट इज जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट दैट ए पर्सन रिसीव्स इन द केस ऑफ कोर्ट मार्टियल एंड डेथ सेंटेंस। किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड या उसकी उम्र कैद को अगर कोई क्षमा कर सकता है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, तो वो पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हाइल इन ऑफिस। जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस में होते हैं तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहीं पर भी शुरू नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट वी स्टार्ट इमरजेंसी पावर्स। आपातकालीन शक्तियाँ जिनका स्रोत जर्मनी का वाइमर संविधान है। These emergency power were taken from the Weimar Constitution in our Indian Constitution. An emergency is a sudden exigency demanding immediate action. In such a situation, the head of the state assumes special power. The president can declare emergency in the following 3 conditions. There are 3 kinds of emergency power. First, that is national emergency, which is by Article 352. Second is the state emergency, Article 356, and next one is financial emergency, that is Article 360. Let us start with the first. The first kind of emergency power, war or external aggression. It is also known as national emergency, which can be declared by the use of Article 352. Such an emergency is implemented when the security of India or any part of India is threatened by war or external aggression or internal disturbance. Yes, जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए या भारी आक्रमण हो जाए तो हमारे देश के अंदर किस आर्टिकल को 352 को डिक्लेयर किया जा सकता है? बाय द प्रेसिडेंट. In our country, there are 3 times when the national emergency was declared by the President of India. First, Indochina War 1962. Second, 1971 during Indo-Pak War, and the 1975 when Indira Gandhi imposed emergency first time in our country, India, due to internal disturbance. First 2 emergencies were due to external disturbances, due to the war with our neighboring countries with China and Pakistan, but in first time in 1975, on 25th of June 1975, when Srimati Indira Gandhi declared emergency on the grounds of internal disturbance. Duration: this type of an emergency must be approved by the parliament within 1 month and is in operation for 6 months at time. Effects: what are the effects of this kind of emergency? The parliament can legislate on subjects mentioned in the state list during this time. During the national emergency, as we know that India is a federal country and the power is divided by the 3 lists: union list, state list and concurrent list. So during emergency time, all the subjects of state list are under the control of union government. The fundamental freedom under Article 19 gets suspended. We know that right to freedom is under Article 19 to 22, and Article 19A is the cluster of 6 freedoms: right to speech and expression, right to get assembled without arms, right to move throughout the country, right to practice any profession, right to live in any part of the country, and right to form association and union. All these
fundamental rights, all these freedoms can be suspended during emergency time. The union government can issue direction to states as to how they should use their executive authority, and during this time the union government can give direction to the state government how to use their executive authority. वो अपने किस तरह से जो सत्ता है उसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं. So all these are effects of the national emergency. Next one is constitutional emergency, which can be declared by Article 356. It is also known as state emergency. Constitutional emergency arises when the law and order of a state breaks down. अगर किसी राज्य के अंदर जो संवैधानिक ढांचा होता है, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, देन दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी इफेक्ट. Constitutional emergency arises when the law and order machinery of a state breaks down. If the president, on receipt of a report from governor, is satisfied that the state government cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution, he can declare president's rule or constitutional मशीनरी. राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 356 के द्वारा किया जाता है. अगर गवर्नर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे दे कि इस स्टेट के अंदर ये जो गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट रूलिंग ओवर द स्टेट बाय द नॉर्म्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल in that state or in that territory. Now, what are the effects? That the legislative assembly is dissolved or suspended. उस राज्य की जो विधानसभा है उसको सस्पेंड किया जाता है. द गवर्नर एंजॉयज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. और जितनी भी शक्तियाँ होती है, कार्यकारी शक्तियाँ होती है, वो राष्ट्रपति के नाम पर गवर्नर वहाँ पर क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं. मोर देन 100 टाइम्स this article 356 used in our Indian political system. Next one is financial emergency, which can be declared by article 360, and this emergency never declare in our country India. आज तक हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल जो आपातकाल है वो आज तक नहीं लगा है. According to Article 360, financial emergency is implemented when the financial stability or credit of India is threatened. Its duration is as per the decision of the parliament. And what are the effects? The union government may give directions to state to observe financial rules, and in this time the president is allowed to reduce salaries and allowances of all, including Supreme Court judges, judges of high courts and public servants. So in this time, during the financial emergency time, the president has power to reduce the allowances, the salary of the judiciary system as well as the UPSC staff members. So dear students, today we discuss about the power and functions of the President of India, the executive power, the legislative power, the judiciary power. In the next video lecture we will discuss about the discretionary power, विवेकाधीन शक्तियाँ, and the position of president in our country India. Thank you and have a nice day.